Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope all of you will be fine. I've got your new Oxford Modern English. It's for class 6 students. Dear students, as you know that previously we have done our poem, The Old Brown Horse. Okay. So we have done the reading of it and the exercise as well. Okay. And I have told you that I have made notes for these. So you can have these notes from your office, admin office. I've prepared these for you. Those notes include the question answers. Here we have got these question answers. इनके जो आंसर्स हैं ये रीडिंग में से लिए गए हैं, सो दैट वोंट बी एनी प्रॉब्लम. उनको अंडरस्टैंड करने में आपको इतना मसला नहीं होगा. बट हियर इज़ अ क्वेश्चन, question number 4. Here they have asked about, do you think there is a rhyming pattern in the poem? What is it? So I thought maybe this is something that you must know कि ये जो rhyming pattern है ये क्या है. ठीक है, जो rhyming pattern होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है सेम वर्ड. ठीक है, सेम जो आपकी साउंड दे उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, rhyming words होते हैं वो. सो हमने ये देखना है कि इन आवर पोएम डू वी हैव सम राइमिंग वर्ड्स विच आर बीइंग रिपीटेड इन द पोएम, और हम लोगों को लगे कि एक पैटर्न सा बना हुआ है. सो उसके लिए वो मस्ट हैव टू रीड वंस अगेन. द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे. He seems to be saying to all who pass, well, folks, I have had my day. So if you take a look, way and then day. These are rhyming words because they have got same sound. Then I am simply watching the world go by and nobody seems to mind. As they are dashing past in their motor cars, a horse who is lame and half blind. Okay, so mind and blind, these are also these are also rhyming words. So you can see we have got a rhyming pattern. And what is that pattern? That if you are going to give like letters to these sentences, then what will you say? A, B, C, and then B again. Okay, because in this line and this line we have got a rhyming pattern. So we have A, B, C, and B. Once again, A, B, C, and B. So this is what we call a rhyming pattern. Okay, so I have mentioned it in the notes. ये आपके notes में मौजूद है. आप इन notes को ले लें और इनको बहुत अच्छे से याद करें. आपने क्या करना होगा कि ये notes लेकर बहुत neatly you will write these in your notebooks first. Okay, and then you will learn them by heart. All right, all the questions that are being mentioned here. All right, dear students, one other thing is that we are going to do some comprehension today. As you know, dear students, that comprehension is something in which we used to read a paragraph and then we try to give the answers accordingly. Okay, so I have got a paragraph from our book. This is class 3 book and they have got a comprehension paragraph here. Okay, so first of all, अगर आपको comprehension दी जाती है, it's unseen. So you have to keep it in your mind कि जब भी आपकी comprehension आएगी वो unseen होगी और वो कहीं से भी आ सकती हैं. तो आपने क्या करना होगा? First of all, you will write down the paragraph. Okay, each and everything. So you must know that what is it about. Like if we just take a look over here, in this comprehension we have got spring is the most beautiful and attractive season, gives nice weather to flowers to bloom. To enjoy spring season, Ikra and Asma went for a picnic with their families. Everywhere was lush greenery and beautiful flowers. They all entered in a park. The park was also full of colorful flowers. Okay, so up till this point we have learned that it was spring season and there was greenery everywhere, and we have got two girls. They visited the park with their families. Both girls loved tulips. Tulip is a kind of a flower. These are very beautiful flowers.
Ikra said to Asma, I love tulips and I will pluck one for myself. Would you like one too? In fact, Asma also loved flowers too much, but last week her father told her that flowers must not be plucked. He also told her flowers are so sensitive. They will wither very quickly. Moreover, it's like being disrespectful to the nature as well as to the people who cared for them in the park. Ikra felt very embarrassed. ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसमें हमें इकरा और असमा का पता चला कि इकरा को ट्यूलिप्स बहुत अच्छे लगते हैं और वो एक ट्यूलिप तोड़ना चाहती है, लेकिन असमा उसको मना करती है कि मेरे फादर ने एडवाइस की है कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, ये एक तो सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी विदर कर जाते हैं, नहीं मुरझा जाते हैं, और हमें नेचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी हमें नेचर की जो है कदर करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो कि नेचर को ख़राब करें। यानी ये गार्डन है वो इतना खूबसूरत लग रहा है विद द फ्लावर्स एंड ग्रीनरी, और अगर आप वहाँ जाके फ्लावर्स तोड़ देते हैं, ग्रास को ख़राब कर देते हैं, कुचल देते हैं, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह हम लोगों को एक लेसन सा मिला। तो अब जब आप क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टोरी से आपकी कॉम्प्रिहेंशन से नहीं लिया, या आपने खुद से आइडिया बनाना है, जो कि मुझे लगता है कि इस स्टोरी के अंदर ये बताया कि मेन आइडिया क्या है कि हमें नेचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, वो ऑलवेज रिस्पेक्ट नेचर, ठीक है, और उसकी तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करना चाहिए। वाई डिड इकरा वॉन्ट टू प्लक फ्लावर्स? बिकॉज शी लाइक दैम एंड शी वॉन्टेड टू प्लक वन फॉर हर सेल्फ। अब आप ये देखें, जिस आपसे टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने उसी टेंस में उसको रिप्लाई करना होता है। व्हाट डिड असमा's फादर एडवाइस हर? असमा के फादर ने उसे क्या एडवाइस की थी? नॉट टू प्लक फ्लावर्स एज दीज आर सेंसिटिव एंड दे विल विदर वेरी क्विकली। इफ समबडी प्लक अ फ्लावर लाइक इकरा, व्हाट विल हैपन देन? अब ये ऐसी चीज़ है जो पैरा में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर सब लोग एक एक फ्लावर भी तोड़ेंगे, तो अगर वहाँ पे सपोज 100 पीपल भी जाते हैं एक दिन में, तो अगर 100 पीपल प्लक करें 1 फ्लावर ईच, तो 100 फ्लावर्स तो इसी तरह चले जाएंगे। तो हमारा क्या होगा? हमारा गार्डन फ्लावर्स से खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जो उसकी एक ब्यूटी थी फ्लावर से वो ख़त्म हो जाएगी। देन वी हैव गॉट कंपेयर इकरा's फीलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी विद हर फीलिंग्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। In the beginning, obviously, Ikra was very happy and excited because she was out with her family and she was enjoying the spring season and she was loving her favorite flower. But by the end of the story, she felt very embarrassed. She was ashamed कि मैंने एक काम गलत किया. So she was quite embarrassed. Okay? तो यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी भी हमें दी गई है कि हमें इसमें से जो नीचे वर्ड बैंक दिया है, इसमें से हमें फ्लावर के पार्ट्स और जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है, प्लांट्स के पार्ट और प्लांट्स को जो चीज़ ज़रूरत होती है, उसको हमने सॉर्ट आउट करना। ऑल राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो अब क्या होगा कि अभी आपको जो आगे असेसमेंट होगी उसमें आपको इसी तरह से एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपके लिए अनसीन है, आपने पहले नहीं देखा, और उस पैराग्राफ से आप क्या करेंगे कि आपने जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे वो आप उसमें से ढूंढेंगे और कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग से वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम we will do something from grammar portion as well. We will do something from creative writing, okay, and then narratives, जिसको हम कहते हैं आपकी स्टोरीज़ के मुतालिक आपको बताएंगे जो आपने खुद भी करनी होगी एज ए होमवर्क, और आपको नोट्स में भी दिया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने नोट्स कलेक्ट करने एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट कि आप जो अपनी जितनी प्रिपरेशन है वो साइड बाय साइड कर सकें और आप बर्डन नहीं हो, बिकॉज मे बी इन द असेसमेंट यू विल नॉट गेट इनफ टाइम। अब छुट्टी क्या पता इस दफ़ा आपको नहीं मिले, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, और आप इन नोट्स को जैसे ही आपको मिलते हैं आप इनको ज़रूर अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, और अपनी कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डू समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप ऑन लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।